लीगल विद्या में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशंस। तो इस वीडियो में हम प्रिसाइसली दो चीज़ें जानेंगे। पहली तो कि सेशंस कोर्ट क्या होता है, एंड द सेकंड इज द प्रोसेस जिससे ट्रायल कंडक्ट होता है इन द कोर्ट ऑफ सेशंस। तो पहले तो हम अपने इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि द CRPC, दैट इज़ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, डिवाइड्स क्रिमिनल ट्रायल इनटू सेशंस ट्रायल एंड मैजिस्ट्रेट ट्रायल। अब कोई भी जो केस है वो वेदर सेशंस कोर्ट में जाएगा या मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाएगा, ये डिसाइड करेगा CRPC का फर्स्ट शेड्यूल। तो सेशंस कोर्ट क्या होता है? जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है ओवर अ क्रिमिनल मैटर, तो उस कोर्ट को हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ सेशंस। Section 9 of the CRPC says that state government shall establish a court of session in every division. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कोर्ट ऑफ सेशन के सामने ट्रायल, इट इज गिवन अंडर चैप्टर 18 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स फ्रॉम सेक्शन 225 टू 237। ये बेसिकली पूरा प्रोसेस है जिससे एक ट्रायल होता है इन द कोर्ट ऑफ सेशंस। मैं 2 सेकंड के लिए वीडियो अभी पॉज करती हूँ सो दैट यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस। तो जो प्रोसेस है इसका हमने एक चार्ट बनाया। दिस विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस। The first stage is that the trial is to be conducted by prosecution. Now, since the trial is to be conducted by prosecution, तो केस कौन चालू करेगा? केस चालू करेगा prosecution, which is our second section, that is opening case for prosecution. अब उसके बाद आता है थर्ड स्टेज, that is discharge. अब अगर थर्ड स्टेज नहीं हुआ, that is accused discharge नहीं हुआ, तो कोर्ट चार्जेस फ्रेम करेगी। और जब चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ स्टेज, व्हेन द कोर्ट विल आस्क डज द एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी और नॉट। अब उसके बाद आता है सिक्स्थ स्टेज, दैट इज डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। देन द सेवेंथ इज एविडेंस अपना प्रोसिक्यूशन पेश करेगा। अपॉन दैट देयर माइट बी एन एक्विटल, एंड अगर नहीं हुआ देन द एक्यूज्ड विल एंटर अपॉन डिफेंस। अब दोनों पार्टीज ने अपने पक्ष रख दिए, देन कम्स द आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट, एंड लास्टली विल हैव अवर जजमेंट। So coming to the first point, that is trial to be conducted by the prosecution. So section 225, that is the very first section, says that every trial before a court of session shall be conducted by the public prosecutor. The public prosecutor कौन होता है? Section 24 of the CRPC it lays down कि हर एक public prosecutor होगा, and public prosecutor means a person appointed by either the central government or state government after consultation with high court for conducting any prosecution, appeal or other proceedings on behalf of the center or the state government. तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये बेसिकली सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब आता है हमारे सेकेंड स्टेज पे, दैट इज ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। So, Section 226 of the Code states that when an accused is brought before the court in pursuance of a commitment of a case under Section 209, the prosecutor will open the case by describing the charge against the accused and stating by what evidence he is proposed to prove the guilt of the accused. So section 209 basically कुछ नहीं, it just says that if any case is brought before the magistrate and उसे ये लगता है कि this is exclusively triable by the court of sessions, तो वो इस केस को रिकॉर्ड करेगा, इसके डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिकल्स को कोर्ट में रिकॉर्ड करेगा। द magistrate shall remand the accused to custody or he can grant him bail, and उसे नोटिफाई करेगा अबाउट दिस केस टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास नोटिफिकेशन चली जाएगी एंड केस की डिटेल्स चली जाएगी, देन पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है केस ओपन करेगा कोर्ट ऑफ सेशंस में। अब थर्ड स्टेज आता है डिस्चार्ज। सो सेक्शन 227 of the code talks about discharge. If upon consideration of the record of the case and the documents submitted therewith, and after hearing the submissions of the accused and the prosecution in this behalf,
the judge considers that there is not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reasons for doing so. सो जब प्रोसिक्यूशन ने केस चालू कर दिया और उसने अपने एविडेंस पेश किए एंड प्राइमा फेसी अ केस इज नॉट बिल्ट अगेंस्ट द एक्यूज्ड, दैट इज द जज इज थिंकिंग कि एनफ एविडेंस नहीं है जो 1% पे गिल्ट एस्टैब्लिश करता हो एक्यूज्ड का, इन दैट केस उसे छोड़ दिया जाएगा only because on the lack of prima facie evidence, and this process is called as discharge. So in the case of Union of India versus Praful Kumar, इसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई थी which the judge will consider while doing discharge. So it states that the judge, while considering the question of discharging the accused, has undoubted power to weigh and scale the evidence for the purpose of finding whether prima facie case against the accused has been made out or not. अब इसमें 3 पॉइंटर्स ये है कि इफ़ अ मटेरियल इन केस shows grave suspicion against the accused which has not been properly explained, the court will be justified in framing charges and proceeding with the trial. तो अगर जज के सामने प्रोसिक्यूशन ने कुछ एविडेंस रखे हैं जो जज को लगता है कि सही से एग्जामिन नहीं हुए, सो इन दैट केस ऑल्सो द जज कैन से कि हम डिस्चार्ज नहीं देंगे एक्यूज को. The second is the test to determine a prima facie case depends upon the case to case, and a universal rule cannot be applied to it. In such cases, the court must trust the judge's discretion. The third pointer is that court can in no circumstance act merely as a post office or a mouthpiece of the prosecution, but has to consider the broad probabilities of the case, the total effect of evidence and documents produced before it. The judge should not make a roving inquiry into the pros and cons of the material and weigh the evidence in conducting the trial. अब फोर्थ स्टेज आता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस. सो इन केस द एक्यूज इज नॉट डिस्चार्ज, तो कोर्ट उसके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम करता है. द सेक्शन स्टेट्स दैट इफ आफ्टर कंसिडरेशन एंड हियरिंग ऑफ द aforesaid, that is after hearing the prosecution, it judge is of the opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offense which is not exclusively triable by court of sessions. He may frame a charge against the accused and, by order, transfer the case for trial to the CJM, that is the Chief Judicial Magistrate, and thereupon the Chief Judicial Magistrate shall try the offence in accordance with the procedure for the trial of warrant cases instituted on a police report. तो पहला सेक्शन बेसिकली यही कहता है कि अगर जज के सामने कोई एक ऐसा केस है जो उसे लगता है कि इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल अंडर हिज कोर्ट, इन दैट केस वो चार्जेस फ्रेम करेगा एंड केस को ट्रांसफ़र कर देगा टू द CJM's कोर्ट. इसका सेकंड क्लॉज बोलता है कि अगर the case is triable by the court of session, then in that case charges will be framed against the accused. इसका सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि आफ्टर द जज हैज़ फ्रेम्ड द चार्जेस अगेंस्ट द accused, एंड वो सेक्शन 1A के अकॉर्डेंस में है. In that case, the charge shall be read and explained to the accused, and the accused shall be asked whether he pleads guilty for the offense charged or claims to be tried. तो सेकेंड सबसेक्शन यही बोलता है कि आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जज उसे चार्ज पढ़ के सुनाएगा एंड पूछेगा कि क्या आप गिल्टी प्लीड करते हैं या फिर डू यू वांट द ट्रायल टू कंटिन्यू. दैट ब्रिंग्स अस टू द फिफ्थ स्टेज, दैट इज कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट. तो सेक्शन 229 states that if the accused pleads guilty, the judge shall record the plea and may, in his discretion, convict him thereon. So, in case the accused refuses to guilt or refuses to this plea or claims to be tried, तो फिर जज की डिस्क्रिशन होती है टू कन्विक्ट हिम और नॉट. चाहे कि उसने बोल दिया यस आई प्लीड गिल्टी फॉर दिस XYZ ऑफेंस, तब भी इट इज़ इन जजेस डिस्क्रिशन कि उसे कन्विक्ट किया जाए या फिर ट्रायल चलने दिया जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे it can be seen that the accused is pressurized by the higher ups to plead guilty. So in such cases, it is judge's discretion to decide whether or not
he should be convicted or whether he should be tried. Now, if accused pleads not guilty, तब क्या होगा? The trial will continue, right? So that brings us to section 230 that deals with the date for prosecution evidence. If the accused refuses to plead or does not plead or claims to be tried or is not convicted under section 229, the judge shall fix a date for the examination of witnesses and may, on the application of the prosecution, issue any process for compelling the attendance of any witness or the production of any document or thing. तो ये सेक्शन बेसिकली ये कहता है कि जब भी एक्यूज गिल्टी प्लीड नहीं करता या फिर ही प्लीड्स दैट आई वांट टू बी ट्राइड, तो जज क्या करेगा? जज प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस के लिए एक डेट फिक्स करेगा, or if the prosecution requires summoning any witness or compelling anyone to come in the court or compelling any person to produce any document, तो जज उस रिगार्डिंग भी समन्स इशू करेगा. That brings us to our fifth section. Now that judge has given a date, तो अब क्या होगा कि prosecution अपने evidence present करेगा. So section 231 deals with the evidence for prosecution. It states that on the date fixed by the judge, the prosecution shall proceed to take all such evidence as may be produced in support of the prosecution. इसका subsection 2 बोलता है the judge may in his discretion permit cross examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further cross examination. दिस सेक्शन बेसिकली स्टेट्स कि जो भी डेट जज ने फिक्स की है उस पर प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस प्रेजेंट करेंगे, अपने विटनेस प्रेजेंट करेंगे. इसका सब सेक्शन 2 बात करता है अबाउट क्रॉस एग्जामिनेशन. तो अगर डिफेंस अगर क्रॉस एग्जामिन करना चाहेगा ही विल रिक्वायर द जजेस परमिशन एंड वो जज के डिस्क्रिशन होंगे वेदर और नॉट टू परमिट हिम टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस. This is because the judge many a times might think कि ये क्रॉस एग्जामिनेशन बस इसलिए करना चाहते हैं टू डिले द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. दैट इज़ वाई द जज में इन हिज डिस्क्रिशन परमिट क्रॉस एग्जामिनेशन. इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होना नहीं होना कंपलसरी नहीं है. देन कम्स एक्विटल. Section 232 talks about acquittal. It says if after taking the evidence for prosecution, examining the accused, and hearing prosecution and defense on the point of contradiction, the judge considers that there is no evidence that the accused committed an offense, the judge shall record an order of acquittal. तो जज 3 स्टेजेस के बाद ऑर्डर ऑफ एक्विटल दे सकता है. दैट इज आफ्टर टेकिंग एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, आफ्टर एग्जामिनिंग द एक्यूज्ड एंड आफ्टर हियरिंग द प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस ऑन दैट पॉइंट. इफ़ ही कंसिडर्स कि कोई ट्रस्टवर्दी एविडेंस नहीं है या फिर कोई ट्रस्टवर्दी या फिर सेटिस्फैक्ट्री कह लीजिए एविडेंस या विटनेस नहीं है विच शोज दैट द एक्यूज्ड हैज़ कमिटेड द सेड एलिज्ड ऑफेंस, तो जज एक्विट कर सकता है एक्यूज्ड को. This might sound similar to discharge, but there is a lot of difference between discharge and acquittal. तो आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि discharge और acquittal में difference क्या है. So discharge पहले तो is a legal order of release given by the magistrate when the grounds on which he or she is arrested comes out as false or unsustained. Acquittal, on the other hand, is legally freeing the accused, that is, ba-izzat bari karna, when he is found innocent of the court by the court after considering all the facts and evidence submitted in this regard. तो डिस्चार्ज जो है वो काफ़ी अर्लियर स्टेज में होता है एंड जो एक्विटल है वो पूरा केस का ट्रायल होने के बाद होता है. A person who is discharged can be re-arrested on the same ground. लेकिन a person who is acquitted of the offence cannot be re-arrested. That is the rule of double jeopardy. Then discharge is given because of the non-availability of prima facie evidence against the accused. और जो acquittal होता है it is ordered when the innocence of the accused is proved after full inquiry of the judicial process. अब अगर किसी का discharge हो जाता है तो fresh proceedings can be initiated against him for the same case. बट अगर एक्विट हो जाता है
तो सेकेंड ट्रायल उसी केस में वापस चालू करना इज नॉट गिवन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज अगेंस्ट अ पर्सन's fundamental right. Now, coming to our next topic, that is entering upon defense. So, section 233 talks about entering upon defense. Where the accused is not acquitted under section 232, he shall be called upon to enter on his defense and adduce any evidence he may in support have thereof. If the accused puts any written statement, the judge shall file it and record. If the accused applies for issue of any process for compelling the attendance of any witness or production of any document or thing, the judge shall issue such process unless he considers, for reasons to be recorded, that such application should be refused on ground that it is made for the purpose of vexation or delay or defeating the ends of justice. So this basically says that अगर कोई भी accused acquit नहीं हुआ है previous section के अंदर तो वो खुद को तो डिफेंड करेगा ही, राइट? सो फॉर डिफेंडिंग हिम ही विल नीड एविडेंस। तो अगर उसने कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट या फिर कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट फाइल की है तो जज शेल रिकॉर्ड इट इन हिज फाइल एंड इफ ही वांट्स एनी विटनेस टू बी समन्ड और इफ ही वांट्स टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट बिफोर द कोर्ट जिसके लिए कंपेल करना पड़े, दैट इज समन इशू करना पड़े, देन द कोर्ट और द जज कैन इशू सच समन अनटिल एंड अनलेस कोर्ट को ये लगता है कि दिस इज डन फॉर डिलेइंग और डिफीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस. Now, coming to the next part, that is the arguments. Section 234 talks about argument. It says when the examination of the witness, agar koi ho to, for the defense is complete, then the prosecutor shall sum up his case and the accused or his pleader shall be entitled to reply. Provided that where any point of law is raised by the accused or his pleader, the prosecution may, with the permission of judge, make his submission with regard to such point of law. तो ये सेक्शन बेसिकली बात करता है कि आफ्टर द विटनेसेस एंड एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस आर डन एंड उसका एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो गया हो तो द prosecutor will sum up his case that what he wants to say regarding this particular case and the defense will be given a chance to plead for himself as well. इसमें इसका प्रोविजो ये बोलता है बेसिकली कि जब डिफेंस का प्लीडर कुछ रिप्लाई कर रहा हो उसने कोई पॉइंट ऑफ लॉ रेज कर दिया हो दैट इज उसने लॉ पे ही क्वेश्चन उठा दिया हो तो जो प्रोसिक्यूटर होगा वो उस पॉइंट को रिगार्ड कर सकता है उसके अगेंस्ट अपना रिप्लाई दे सकता है बट दैट विल बी डन विद द परमिशन ऑफ जज. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट दैट इज जजमेंट. Section 235 talks about judgment. It says, after hearing the arguments and point of law, if there was any, the judge shall give the judgment of the case. अब judgment क्या हो सकता है? Judgment will be either acquittal or conviction. So it says that if the accused is convicted, the judge shall, unless he proceeds in accordance with the provision of section 360, hear the accused on the question of sentence and then pass sentence on him according to the law. तो इसका फर्स्ट सेक्शन दैट इज सब सेक्शन यही कहता है कि इफ़ एनी आर्ग्यूमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग टू पॉइंट ऑफ लॉ तो जज उन्हें कंसिडर करेगा वेल गिविंग हिज जजमेंट इन द केस. एंड प्रोविजियो 2 कहता है दैट इज क्लॉज 2 ये कहता है कि इफ़ अ कोर्ट होल्ड्स अ पर्सन गिल्टी it may consider the question of sentencing in light of various factors, that is उसका previous criminal record, उसका age, his employment, educational background, emotional and mental conditions, इन सबको consider करके ही कोर्ट अपना judgment pass करेगा. There is another section that is section 236 जो बोलता है कि while giving judgment court उस accused person के previous convictions को भी देखेगा whether he has committed any crime during the previous years or is he a repeated offender. So that will be it for this video. Thank you for watching everyone.